So, hey guys, welcome back. I hope everything is good and you all are studying hard. So, up till now, we have seen many things, and in those many things, very few points are like कि थोड़ा tough होगा. बाकी तो I have tried my level best to oversimplify everything. ठीक है. So इन टुडेज सेशन एक्चुअली आई हैड थॉट कि जैसे पिछली बार मैंने आपको बोला कि आई विल बी गिविंग यू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बट देन आई थॉट कि ये तो आप भी कर सकते हो, राइट? लाइक आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, सो यू जस्ट नीड टू टेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल and the chemical properties. So why I should interfere into that? So instead of that, I am giving you a small homework. Please do that. Please make out the differences between the chemical and the physical properties of the metals and non-metals. So in today's session, I was thinking to take the topic that is the occurrence of metal. ठीक है. So like in nature, how we find metals. ठीक है. In what state we find metals? I think it is visible. So okay. So occurrence of metal in nature. Metal in nature. ठीक है. So basically this is a very interesting topic because see जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा जो सबसे पहला हमारा इंडस्ट्री था टाटा का, टाटा इंडस्ट्रीज़, जो स्टील, टाटा स्टील इंडस्ट्री, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है दे आर बेस्ड ऑन दी अकरेंस ऑफ मेटल्स इन दी एनवायरनमेंट. ठीक है, इन दी नेचर. सो जो किस फॉर्म में वो मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना पैसा, कितना इकोनॉमी हमारा जाएगा और कितना इकोनॉमी हम अर्न करेंगे, कितना पैसा हम अर्न करेंगे. तो जितना अगर सपोज अर्निंग ज़्यादा है कहीं से एक्सट्रैक्शन का, तो डेफिनेटली विल गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मेटल फ्रॉम देयर. सो बेसिकली हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं नेचर में अवेलेबल, किस फॉर्म में ये मेटल्स अकर करते हैं और कौन कौन से मेटल आर दे इकोनॉमिक और नॉट, यही हम करके और फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं. लेकिन किस फॉर्म में अकर करते हैं पहले हम वो देखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली मेटल्स कभी भी, मेटल्स जो है मोस्टली यू कैन से आर फाउंड इन कंपाउंड स्टेट ओनली, बट येस देयर माइट बी सम प्लेसेस जहाँ पे वो फ्री स्टेट में भी हों. तो पहला पॉइंट हम आज के सेशन की शुरू करते हुए लिखते हैं कि मेटल्स अकर in nature in free state or in combined state. तो दोनों ही कंडीशन में हमें मिल सकते हैं मेटल. ठीक है. सो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड द पेज इनटू 2 सेक्शन एंड विल बी जस्ट राइटिंग इन द सेम वे. ठीक है. अ मेटल इज ऑलवेज सेट टू अकर इन नेटिव और फ्री स्टेट. मतलब क्यों? बिकॉज सी मेटालिक स्टेट में अकर करना, जैसे किसी भी चीज़ का, लोहे का इन फॉर्म ऑफ, जैसे हमने बहुत सारे सिविलाइजेशन को खोद करके बाहर निकाला हुआ है आर्कियोलॉजी के थ्रू, राइट? वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सिविलाइजेशन. इन दो सिविलाइजेशन हमने देखा है कहीं पे ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज मिले हैं, तो कहीं पे लोहे का, आयरन का प्लॉ मिला है. So there are many things, right? So all these things can be easily extracted. So you can say कि they are mostly found in the metallic state. So you can say here कि a metal is said to occur in, a metal is said to occur in nature basically. ठीक है. In nature, in its native form, in its native or free state. ठीक है. free or metallic state, you must say metallic state. ठीक है.
लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, दैट इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, ठीक है. सो वाई दिस इज सो? बिकॉज gold when left exposed in air practically does not undergo any change because it is very less reactive metal. So those metals which are less reactive will definitely be present in the metallic state only, ठीक है. So we can write the example over here. For example, gold, ठीक है. So why? Because less reactive, so it easily do not form any compound with any element, ठीक है. Fine. But there are metals जो compound या combined state में मिलते हैं. So we'll also go through those metals. So अच्छा ठीक है, गोल्ड के बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं कि why it is so. This is because gold, this is because because gold is unreactive with moisture, oxygen, or you can say carbon dioxide present in air, or carbon dioxide present in air, ठीक है. So you can, as per this, you can say that कि those metals which remain unaffected by moisture, oxygen or carbon dioxide, they are going to be present in native or free form. So you can say thus those metals which remain unaffected by moisture, oxygen or carbon dioxide are mostly present in their native or free state, ठीक है. Now if it is so, इसका मतलब there are metals which are more reactive, so they are not going to be present in free state, ठीक है. So you can easily write it. So the reactive metals, the next point I would say कि जितने भी reactive metals हैं, those metals will be always there in the form of a compound, right? So we'll write कि the reactive metals normally, that is the metals which react with moisture, ठीक है. The react moisture, oxygen or carbon dioxide or other chemical reagents, ठीक है. तो they are always found, the reactive metals are always, you can say, are always going to be present in the combined form, not in the free state. So we'll say are always present in compound or combined form, right? Compound form, not in free state, ठीक है. So you must remember these things. So जो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं जो भी एलिमेंट्स, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हो एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है. सो व्हाट विल बी डूइंग, ठीक है. सी मेटल्स यूजुअली अकर इन कॉम्बिनेशन, राइट. तो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल्स, they are always going to undergo through the metallurgical process. So that is, we have to study in this. So we'll be writing एक फ्लो, छोटा सा फ्लो डायग्राम बना देती हूँ मैं, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू, ठीक है. सो एक छोटा सा फ्लो डायग्राम, नॉट मच, दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल
of metals in nature. ठीक है, so it will be in two form. ठीक है, two form. The first one is in free state, in free state, or you can say native form, or you can say metallic state, whereas the other is in combined state. ठीक है, सो जो फ्री स्टेट में होता है दे आर लाइक जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, देन यू हैव प्लैटिनम, ठीक है, देन यू हैव सिल्वर, एंड देन यू हैव मर्क्यूरी एक्सेट्रा. ठीक है, whereas जो कंबाइंड स्टेट में होता है दे आर नॉर्मली सोडियम, calcium, then you have potassium, then you have lead, copper, etc. Lead, copper, I think it is, yeah, now I think it is visible, copper, etc. ठीक है, so all these metals are present in the combined form and these in the free form. ठीक है, so now as we know कि free state में और combined state में मिलते हैं ये elements हैं, तो we'll just go through few definitions which are very important, the basic definitions. The very first one is your minerals. ठीक है, सो मिनरल्स एंड ओर्स. ठीक है, मिनरल्स एंड ओर्स. सो व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नथिंग बट ऑल द मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, मेटल बियरिंग substances found in the earth's crust, in the earth's crust are called मिनरल्स. ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन हो गया. या फिर आप कह सकते हो द सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है, द नेक्स्ट यू कैन से और द सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ मेटल of metal occurring in nature is called or are called, better to write are because एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं, are called minerals. Clear? Fine. So this is the simple definition of mineral. If I talk about ores are the more concentrated form of mineral. ठीक है, so let's move to the examples. So let's take some examples of the minerals. So we'll write for example. ठीक है, so what is the example? The examples which we'll be taking here will be your NaCl. See, many metals you will find in the combined state. So NaCl,
then KCl, then your calcium carbonate, then your magnesium carbonate, ठीक है, then your zinc blend, ठीक, then you have copper sulfide, then you have Fe2, S3, etc. So what are they? These are the your minerals in nature, ठीक है. So in nature these are the minerals of these metals, ठीक है. So I think it is visible till the end, right? Yeah. So now moving to some very common minerals found in India, so we'll see them. So the first one will be for the sodium metal, okay. So I'll write here common minerals in India, okay, common minerals in India. So the first point I'll be talking about is about sodium. Sodium is found in two form. One is the minerals, ठीक है. One is the tincal or borax. In both it is found, and the place where it is found is your Ladakh or Kashmir, ठीक है. Ladakh or Kashmir. Then you have magnesium. The second metal we are talking about is the magnesium. The name of its mineral is dolomite and magnesite, ठीक है. So what it is? Dolomite and magnesite, and it is basically found in Tamil Nadu, ठीक है. Then you have the third one, calcium. Calcium is basically found in the form of gypsum, ठीक है. So this gypsum in India is present in nearly 4 places. That is, first is the Rajasthan, then you have Tamil Nadu, then you have it in Jammu and Kashmir. Then fourth one is your aluminium. See, the very common ore of aluminium is your bauxite, ठीक है. So very common ore of aluminium is your bauxite, and it is found in Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Orissa, ठीक है. So aluminium, which is commonly found in the bauxite ore, is present in these places. Then you have fifth one, that is copper, ठीक है. So where the copper is found, you can say here कि it is basically found in the form of chalcopyrites or copper pyrites or malachite, you can say, ठीक है. So I'll write here chalcopyrites, or you can say, or copper pyrites, or you can say malachite, ठीक है. So these are the different form, and they are present or they are found in places like Jharkhand, Orissa and MP. So in Jharkhand
Orissa and MP. ठीक है. Then the next is your zinc. Sixth one. Acha, many you have not seen, right? Okay, fine. So the next one is your zinc. This is found in the form of zinc blend. ठीक है. This is found in the form of zinc blend, mostly in Rajasthan. ठीक है. Then you have is your manganese. Yeah, it is found in the form of pyrolusite. ठीक है. It is found in the form of, that is the name of the mineral is pyrolusite. ठीक है. And the place where it is found is your Maharashtra, Karnataka and Jharkhand. So I'll write here Maharashtra, Karnataka and Jharkhand. ठीक है. Then lastly, the very common metal is your iron. ठीक है. And this iron is present in the form of hematite, and hematite is the very common ore of iron, and you can say it is the very economic ore of iron. You must remember this, it is the most economic form of iron. ठीक है. And now this is present in what all states? So it is basically present in the Jharkhand and Karnataka. ठीक है. It is present in the Jharkhand and Karnataka. And you must also be aware कि जहाँ जहाँ पे भी ये और मिलते हैं वहीं वहीं पे फैक्ट्रीज होती है इनके एक्सट्रैक्शन की. So you can see the Tata plants in the Jharkhand, etc. Right? So these are the different minerals and their forms present in the atmosphere, in the basically environment in our earth. ठीक है. सो ये सभी और कॉमन ओर हैं, और इन कॉमन ओर्स को आपको याद भी रखने हैं, बिकॉज मैनी अ टाइम्स इट मे बी आस्क्ड कि विच ऑफ, दे विल गिव यू द नेम्स ऑफ डिफरेंट ओर एंड दे विल आस्क यू कि विच ऑफ द ओर इज of aluminium or of iron, which is the economic ore of iron, etc. So I have given you some few tests also, MCQ tests. In that also you might have seen कि किस तरह से questions पूछे जाते हैं. So because of these things you must be very aware about these type of ores. ठीक है. So with this I would like to end up the session. I hope you have just gone through each and every point of the today's session, and you are getting very thorough out of it. So with this I would like to end up the session. We'll meet in the next session. Till then, bye bye.